back up north from down south in Tamil Nadu. We are bringing you up to Ayodhya, where 2 Shaligram stones dispatched from Nepal for the Ram temple have reached Ayodhya. The stones are most likely to be used for carving an idol of Ram Lalla for the Ram Janmabhoomi temple. Considered to be centuries old by the faithful, the stones are accompanied by around 100 VHP, Vishwa Hindu Parishad office bearers, and a 5-member delegation from Nepal. This is on a Sheela Yatra or a procession. Now, my colleague Pranshu Mishra, our UP Bureau Chief, he's live with us this morning from Ayodhya to bring us more details about this entire story. Pranshu, good morning. Could you walk us through the proceedings that are about to take place? Yes, that's right. In fact, there is not, I'll say that there is a decent amount of turnover around here. But first, get a glimpse of the stones, what these stones are. Now, see, these are these 2 stone slabs which are here. Devotees, of course, calling them as the Shaligram stone. But people who have seen Shaligram stone, it's generally black in color. Now, we have spoken to people from Nepal who have accompanied here, and they say that one of the bigger blocks, the block which you see, the second block, that is the calcite, and this one is the cauterized block weighing around 26 ton and 14 ton, but being referred in devotion as the Shaligram rock. They have been obtained from Nepal, from the Gandaki river, and in fact from the Mayagadi district of Nepal, where the Gandaki river is. And in fact, we have spoken to the researcher, the water researchers from Nepal who have accompanied here, and they do say that this is a very old ancient rock formation. In fact, estimated by geologists to be between 4 crores to 6 crore years back. That is what the estimate is, and generally we have seen that in major Hindu temples across the country and in Nepal, the idols have been carved out of these old stones, and these stones will now be used for carving out the statue of Rama, of course, in his child roop, in his Kishore Avastha, and the second one will be slab would be used for carving out the statue of goddess Sita. This is what for the moment here is. The worship process is being done, and I'll show you that this entire arrangement for the worship is being made. Once the worship is done, then these statues or these slabs, these stone slabs, would be handed over to the Ram Temple Construction Trust for further, carving them out. And this entire area is the Ram Sevak Puram, where all along you see some sort of festivity sort of mood exists here. The process is going on. What we can tell our viewers is that this moment is important for construction of Ram Temple. Reason being that the temple construction is already a task underway. We all know that the preparation is to open the temple by January 2024, and before that the installation of these statues at the Sanctum Sanctorium needs to be done. So the arrival of these big huge tons of weighing stone slabs here in Ayodhya clearly marks a big moment in the ongoing construction of Ram Temple, and that moment is that while the temple is being built, the construction is coming up. We have shown in our past reports. Now it's the moment when very soon we'll also be seeing that the stones are being carved out to get the Ram temple. But clearly it's an important moment in the journey of Ram temple, and all along its way from Nepal via Bihar, then Gorakhnath, and then here into Ayodhya, we have seen devotees coming out of reverence, coming out, trying to see these stone slabs, and if possible touch and feel them, because it is a moment of great reverence for them. And in the build-up to election, all these symbolism also has a lot of political meaning, because it helps to further intensify that entire spirit of Hindutva, which often acts as a glue on which the caste differences are diluted, and the varying caste here in Uttar Pradesh, the backwards Dalits and the upper caste, all unite in a larger sentiment of Hindutva, and it has often worked in favor of the Bharatiya Janata Party. And that's the reason why we have also seen a lot of fanfare, a lot of celebration around the way these stone slabs were brought in from Nepal to Ayodhya, and a lot of religious importance was attached to them. So clearly, it has 2 dimensions. One, of course, related to the physical aspect of the temple construction, the fact that temple construction is gaining pace, and a new moment has arrived in the process of temple construction, where the carving out of the idols will start. And the second, of course, is the political side, where every symbol, every development attached to the construction of Ram temple is being played out to the larger gallery, so that the Hindutva sentiment
continues to be strong in the very crucial states like Uttar Pradesh and the North Indian states like Bihar and elsewhere. Prancha, would it be possible at all to speak to some of the faithful who are present around you right now? Well, yes, I'll do try to get a sense. Sir, अगर आप free हो, एक मिनट आ जाइए. Well, we do have this water researcher from Nepal who has accompanied all this यात्रा here. सर, आप ये बताइए कि ये पत्थर जो आए हैं, इन पत्थरों की यात्रा क्या है? ये पत्थर कौन से पत्थर हैं? शालीमार पत्थर हैं कि कैल्साइट हैं? किस तरीके से इनको डिफाइन करेंगे हम लोग? ये छोटा वाला जो है ये कैल्साइट है. अच्छा. वो बड़ा वाला 26 टन वाला है ना, वो है क्वार्टजाइट. तो इन्हीं को शालीग्राम पत्थर भी कहते हैं? नहीं, शालीग्राम पत्थर दूसरा होता है, तीसरा. शालीग्राम अमोनाइट है. वो छोटा छोटा में से होता है. वो प्राकृतिक स्वयंभू मूर्ति है. उसमें नक्काशी नहीं करता है. नक्काशी करना शास्त्र भी रेकमेंड नहीं करते हैं. कोई हमने शालीग्राम शिला में हम लोग हथियार नहीं डालते. ये बात सही, क्योंकि अयोध्या के भी कुछ साधु संतों ने बात करी कि अगर ये शालीग्राम पत्थर है तो इसको काटा ना जाए, इसको उकेरा मत जाए, इसको ऐसे छोड़ दिया जाए. तो ये जो पूरी बात है कि ये जो शालीग्राम पत्थर है ये शालीग्राम पत्थर नहीं, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो कैल्साइट वो क्वार्टजाइट है. कैल्साइट और क्वार्टजाइट. तो लेकिन फिर भी ये पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है. इन्हीं से मूर्तियां बनती है मंदिरों में. बिल्कुल है, क्योंकि देखिए गंडकी के गर्भ में अमोनाइट वो शालीग्राम शिला मिलती है. इसीलिए उसको जल को हम चरणामृत बोलते हैं. वो चरणामृत के स्पर्श से, उसके स्नान से, लाखों करोड़ों वर्ष स्नान करने के वजह से ये देवशिला बन गया है. उसके जल से. लेकिन उसके बराबर के ये नहीं है. शालीग्राम शिला बराबर के तो नहीं है. शालीग्राम शिला के सानिध्य रहने के कारण से और गंडकी के चरणामृत से स्नान करने के कारण से, लगातार ये उसमें रह के स्नान करने के कारण से ये देवशिला वो उतने शालीग्राम सारा ही पुण्यशील है. शालीग्राम शिला जैसी ही पुण्यदायिनी है. हाँ. पर ये शालीग्राम नहीं है. शालीग्राम नहीं है. अच्छा, तो ये बात बहुत जहन में आती कि इन्हीं दो चट्टानों को क्यों चुना गया? गंडकी में वहाँ पे तो और भी चट्टानें होंगी. क्या इनके साइज को देख करके या इनके कॉम्पोजिशन को देख करके इनको चुना नहीं, गया? साइज भी बहुत मिलेगा. हाँ. यहाँ के रिक्वायरमेंट के साइज में बहुत मिलेगा. वो अवेलेबिलिटी बहुत है. बहुत ये देवघाट में से भी मिलता है. जहाँ से भी ये शिला मिलने में कोई दिक्कत नहीं है. पोखरा में, ये गंडकी में कैल्साइट क्वार्टजाइट खुद ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ह्यूमन सेंटिमेंट और शास्त्र के प्रमाण चाहिए ना. शास्त्र में क्या क्या बताया है वो प्रमाण चाहिए. वो भागवत में बताया कि राजर्षि भरत का जो चरित्र, नाभि का चरित्र बताया है, वो पुलह से ऋषि का चरित्र बताया है, वो गलेश्वर क्षेत्र से में मिलता है. और भारतवर्ष का एक चक्रवर्ती राजा था. आप जब ये पत्थर वहाँ से चढ़े तब से आप साथ में ही हैं? हाँ. तो आपका क्या परिचय है? आप वाटर रिसर्चर हैं क्या? हाँ, है वाटर कल्चर का रिसर्चर हूँ मैं. मेरा नाम कुलराज चालीसे है और मैं पोखरा के हूँ. तो आपको क्या नेपाल गवर्नमेंट ने साथ में इसमें रखा था? कैसे? नहीं, वॉलंटियरली है. आप वॉलंटियरली है. नहीं, मैं अधिकारी पदाधिकारी कुछ नहीं हूँ. अच्छा, ओके, ठीक. So see, there is one sentiment, there is also many other people. I'll try to get you a sense. आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम लोग शिला के साथ में आए हैं, जनकपुर धाम, नेपाल. आप भी शिला के साथ में आए भाई साहब? हाँ, आप लोग भी साथ में आए? हाँ, तो ये पत्थर जो है ये पत्थर शालीग्राम है कि क्वार्टजाइट, किस तरह का पत्थर है? ये शालीग्राम है. जिस जगह से ये पत्थर निकला है हम लोग वहाँ से निकाल के काली गंडकी जो कास्की जिला में पड़ता है, पोखरा के पास है, और वहाँ पर पत्थर को, वहाँ पर जो जगह है वो शालीग्राम ही पत्थर वहाँ पर मिलता है. हाँ, नेपाल. नहीं, पर अभी जो जिन रिसर्चर से हम लोग की बात हो रही थी, जो साथ में आप लोग आए, वो कह रहे हैं कि ये शालीग्राम के सानिध्य में पत्थर रहा है, इसलिए बहुत पवित्र हो गया है. पर ये क्वार्टजाइट और कैल्साइट पत्थर है जिससे कि मूर्तियाँ बनती है. जी, ये पत्थर, इस पत्थर को हम लोग भगवान विष्णु के रूप में देखते हैं. जो शालीग्राम, जिस जगह शालीग्राम रहता है उसी जगह पर ये पत्थर रहता है. तो इस पत्थर को भी शालीग्राम के ही माना जाता है. अच्छा. और भगवान विष्णु के रूप में इन पत्थर को हम लोग मानते हैं. इन पत्थरों को मानते हैं. आप लोग भी वहीं उसी नेपाल से ही हैं? जी, मैं जनकपुर से हूँ, जनकपुर धाम से. जनकपुर तो ससुराल है भगवान राम की. जी. तो ये पत्थर, इस पत्थर का क्या आध्यात्मिक धार्मिक महत्व है? इन्हीं दो पत्थरों को क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ पे तो इस तरह के बड़े पत्थर और भी मिले होंगे, तो इन्हीं दो का चयन क्यों किया गया? काली गंडकी में शालीग्राम, मतलब वहाँ पे मानता है नेपाल में, जो काली गंडकी की जो पत्थर सब है वो एक तो पुराना है, बहुत हजारों साल पुराना है.
और उसको उसमें देवत्व का एक भाव वहाँ देवशिला करके वहाँ से मान्यता है नेपाल में। और वहाँ कुछ दिन पहले से ये साइंटिस्ट वगैरह जाके जो पुराना हो उस हिसाब से वहाँ से लाया एक गया। बात यहाँ पर ये भी अयोध्या में उठी और हिंदू मान्यता भी कि शालिग्राम पत्थर से को काटा नहीं जाता है, उस पर छेनी नहीं चलाते हैं, तो अगर ये इस पत्थर के साथ कर सकते हैं क्या वो? तो बिना छेनी चलाए बिना काटे हुए तो मूर्ति का रूप तो नहीं होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्षमा पूजा लेकिन वहाँ उठाने से पहले क्षमा पूजा इसीलिए की जाती है कि अगर उसमें कोई गलती हो कुछ हो तो माफी किया जाए। तो इसको शालिग्राम पत्थर ही कहेंगे या ये कहेंगे कि शालिग्राम पत्थर के साथ रहा है? और नहीं, शालिग्राम ही कहेंगे इसको। शालिग्राम ही कहेंगे जी, संदेह नहीं है, 100% शालिग्राम ही पत्थर है। और हम लोग सैकड़ों की संख्या में जनकपुर धाम से आए हैं यहाँ पर श्री राम को अवध में इनको स्थापना करने के लिए। वैसे भी ये शालिग्राम भगवान राम का ही रूप है, लेकिन इसको प्रतिमा के रूप में निखार करके और उस पर जो हथौड़ी चलेगी इसके लिए क्षमा पूजा बजाते वहाँ से वैदिक मंत्र के द्वारा सैकड़ों वहाँ पर पंडित लोगों के द्वारा पहले क्षमा याचना की गई है। उसके बाद हम लोग पवित्र इस शालिग्राम को यहाँ लाए हैं। अब यहाँ आज हस्तांतरण करने की बात है। अब यहाँ श्री राम अवध में यहाँ पर मंदिर में सजे बने और यही हम लोग की कामना है। बड़ी उल्लास के साथ हम लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में जनकपुर धाम से। So see, the people are clearly having a lot of religious sentiment out here, but we did hear multiple versions here. These stones are, valuable, they are precious, they have a lot of reverence because they are actually very old, almost on the era when the earth was being formed. Around 6 crore years, that is what is being estimated. And often these stones have been used in Hindu temples across the country in Nepal for construction of a carving out of idols. And that's the reason why there is so much of reverence. But largely speaking, it is an occasion that has been given a very larger phenomena, and it denotes a very turning point or a remarkable juncture as far as the construction of Ram temple is concerned. The temple construction is going on a few hundred meters from here, and here at Ram Sevak Puram, finally those those rocks, those slabs have arrived, out of which the ideals of the deities Lord Ram and Goddess Sita would be carved out. Okay. Thank you so much, Pranshu, for bringing us all of those details. It is time right now for a short break right here on the Breaking News Show. We're going to leave you with those visuals and we're going to see you in just a few minutes with more of the country's top stories on the other side.